Question first. Which of the following is not a fundamental right under the provisions of Constitution of India? So first option is equality of opportunity in matters of public employment, prohibition of traffic in human being and forced labor, prohibition of employment of children in factories, and just and human conditions of work and maternity. So answer is fourth, because this provision is given under the directive principles of state policy. Question 2. The concept of invisible hand theorem in the context of labor market was put forward by, now who has given this theorem? So answer is Adam Smith. Who proposed the 3-tier structure of industrial relation activities? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जॉन डनलप ने सिस्टम अप्रोच दिया है जिसमें 3 एक्टर्स के बारे में बात हुई है, बट 3-tier सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय कोचन, कर्ट्स एंड मकर्सी. Fourth question is, experienced managers have a simple and effective way to check whether their goals are good or not. For this, they use acronym SMART. So यहाँ पर SMART का full form पूछा गया है, क्या होगा? So here the answer is specific, measurable, attainable, relevant and timely. Option fourth. Fifth question is, which of the following theoretical perspective implies stewardship विदाउट ओनरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस? सो ये इंडस्ट्रियल रिलेशनल अप्रोचेस जो होती हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. यूनिटरी पर्सपेक्टिव या यूनिटरी अप्रोच है एक अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच एंड ट्रस्टीशिप अप्रोच है. नाउ दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज ट्रस्टीशिप अप्रोच. Question 6. Under the Employees Compensation Act 1923, the list of occupational diseases is provided under which schedule? So Employees Compensation Act की अगर बात करें तो Schedule 3 में occupational diseases के बारे में बात की गई है. ILO का Convention number 138, this is question 7th. ILO Convention 138 is related to what? So first option is abolition of forced labor. Then right to collective bargaining, worst form of child labor, and minimum age for admission to employment. Now the answer is fourth. And बाकी के जो 3 options है, abolition of forced labor, right to collective bargaining, worst form of child labor, इनके क्या convention numbers है? प्लीज़ कोई भी आप comment section में मुझे आंसर दे सकते हैं इसके बारे में. Question 8. Which of the following is a statutory body? इनमें से कौन सी एक statutory body है? First option is ILC, Indian Labour Conference, then SLC, Standing Labour Committee, then Industrial Labour Committee meant for plantation, and Safety Committee. So the answer is Safety Committee. Safety Committee एक particular act के अंदर mentioned है. वो कौन सा act है इसका आप मुझे आंसर comment section में दे दीजिएगा. Question 9th. Welfare implies welfare for man, his family and his community. Which of the following concept explain this? Now there are 4 concepts: total concept, positive concept, social concept and relative concept. So अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज अबाउट सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से लाएंगे जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलफेयर के बारे में बात करूंगी मैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज, for which industry the first non-statutory wage board was set up in India? So here the answer is cotton textile. Now these questions are important for people who are preparing for UGC NET as well as ALC and other exams जिसमें लेबर वेलफेयर IR वगैरह के बारे में बात होती है या पूछा जाता है.